भारत भर में नरेंद्र मोदी की हिंदुत्वा सोच और पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे जोर पकड़ रहे हैं। मुतनाज़ा शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर पुलिस तशद्दुद और फायरिंग से तकरीबन 27 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। रियासतों में और मुताबिक रियासतों में इंटरनेट सर्विसेज को कई घंटों के लिए बंद कर देना मामूल का अमल हो चुका है। इस पूरे माहौल में तेजी से सियासी मकबूलियत खत्म हुई है, कम हो रही है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की। यही वजह है कि इसी हफ्ते झारखंड के इंतहाई अहम रियासती इलेक्शन में बीजेपी बुरी तरह से इलेक्शन हार गई। इस साल 5वां इलेक्शन है, रियासती इलेक्शन, जो बीजेपी हारी है। एक के बाद एक राज्यों में बीजेपी से कुर्सी छूटी जा रही है। 2019 के आखिरी में आते आते अब सिर्फ देश के 16 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी की सरकारें हैं, लेकिन देश के करीब 43% आबादी पर अब वो काबिज है, जो कि 2019 में 71% तक हुआ करती थी। भारत के नामवर सीनियर सहाफी शेखर गुप्ता समझते हैं कि मोदी की हार की वजह, जो हालिया इलेक्शन में हार हुई, उसकी वजह यह कि माशी तरक्की का भरपूर जमूद है पूरे भारत में। बीजेपी ने तमाम सियासी चेक ऑलरेडी कैश करा लिए हैं। All good figures are declining right now on the economy. Joblessness is running at historic highs. People are hurting, and that is showing in people's voting performance. Hyper-nationalism and polarization has now stopped working. The 2019 national election was swept on that basis, but remember, Haryana and Maharashtra took place weeks after the abrogation of Article 370, etc. in Kashmir. And yet BJP performed way below par or way below expectations. Similarly now, the temple judgment has come, promises of the temple have been made, CAA and now NRC, hyper-nationalism and polarization is a check which has been cashed. ये कहना था शेखर गुप्ता का, लेकिन भारत के नामवर और इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड इकोनॉमिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, आजकल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम का कहना है कि भारत की माशी कैफियत या माशी हालात खराब नहीं है, बल्कि दरअसल भारतीय मैशत इस वक्त ICU में दाखिल हो चुकी है और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन के अंदर है। इसका पूरी तफसील से उन्होंने जिक्र किया NDTV के एक बहुत ही मुमताज प्रोग्राम में। Is Indian economy heading for ICU? The growth rate is plummeting in India. It was 8% a short while ago, and now it's at 4.5% in the most recent quarter. As we go through the indicators that we're going to go through now, to look at the more detailed macro indicators, you get the impression that in fact maybe even 4.5 is paints a picture, rosier picture than the underlying reality. That is shocking. अरविंद सुब्रमण्यम का कह रहा है कि कई एतबार से भारतीय मैशत इतनी खराब है जितनी 30 साल पहले थी। 30 साल में कभी भी भारतीय मैशत की इतनी ज़बूहाली देखने में नहीं आई। If you look at imports, how bad is the Indian economy? Imports are almost as bad as 30 years ago. Imports are down 6%. And capital goods industry, really important, it's almost a proxy for investment, down 10%. Now, when you've got -6 and -10, you have to go back 30 years to find things similar. Look at that. And what was the growth rate 30 years ago? 1.1 with those kind of figures. So when we look at the figures today, -6 and -10, what is the GDP growth? Is it really 4.5? Based on the comparison, you'd have to question it. और इस वक्त भारतीय हुकूमत को, उसके खजाने को वसाइल की शदीद कमी है और रिसोर्सेज का बहुत बड़ा फुकदान है जो कि पैदा हो गया है, जिसकी वजह से किसी अंदाज की कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही। Imports down, exports consumer down, goods down, exports down, capital goods down, consumer goods down, tax revenues down. Tax revenues, okay, let's just have a look at tax revenues. Look at this, direct tax, we're not even talking about GST here. Direct tax revenues are falling
0% growth. Yeah. So That is essentially, terrible. So essentially, both direct taxes and the GST, we're collecting for the first 8-9 months for which data are available, we're about 3.5 to 3.6%, which in inflation adjusted is virtually 0%. So essentially, the government is squeezed for resources. جو بہت بڑے بحران ہیں اس میں ہاؤسنگ انڈسٹری اور ریل اسٹیٹ انڈسٹری کا بہت برا حال ہے. لاکھوں کی تعداد میں عمارتیں ہیں جو بھارت کے بڑے بڑے شہروں میں بن چکی ہیں مگر اس کے خریدار موجود نہیں ہیں. بینکوں سے پیسے لے کے عمارتیں بنائی گئی ہیں اور یہ معیشت کے لیے ایک ناسور بن گئی ہیں. Look at the housing sector. What has happened to it? Housing sales are 2 lakh crores a year. Look at the amount of unsold houses, 8 lakh crores a year. And it's been this kind of for the last 3 or 4 years. Remember, lending to real estate was growing at 20% per year, 20% per year, but it was mostly or largely financing the buildup of unsold inventory. So essentially, you're not lending to build, but you're lending to just maintain the inventory. My God. اور جس کی وجہ سے بھارت کی معیشت اس وقت اس کا بھرکس نکل چکا ہے. کمرشل بریک